Hello everyone, welcome to OPSC STUDY. My name is Siddharth Panda and in today's Prelims Booster 2024, we will discuss another important topic, that is Polity Compilation MCQs. Before going to the topic, OPSC STUDY has launched Geography Optional Foundation course which will be only at 5,000 rupees of minimal cost. तो आपण माने डेफिनेटली जो फाउंडेशन कोर्स अछि ताको जॉइन करंतु जोठी आपन को फुल सिलेबस कवरेज रहिबो. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी मैप वर्क्स एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस आल्सो इंक्लूडेड. ता बाद रे मध्ये जो माने रिकॉर्डिंग माने लाइव क्लासेस मिस करिवे सेमान को रिकॉर्डिंग वीडियो मध्ये अवेलेबल हे जिवो. एवं एज यू नो OPSC स्टडी हैज ऑलरेडी मास्टर्ड इन योर ऑप्शनल टेस्ट सीरीज. तो आपन को पूरे टेस्ट सीरीज मध्ये मिलिबो. So I must recommend all of you to go through the Geography Optional Foundation course. जल्दी से join करंतु एवं course avail करंतु. Coming to the MCQ compilation of polity, जोट्री कि आपनकर previous year question सहित बहुत सारा आपनकर नया questions मध्य रही अछि. Which of the following is or are the exclusive power of the Lok Sabha? लोक सभा रा एक्सक्लूसिव पावर, ओनली पावर ऑफ लोक सभा कोन कहूची? टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. सी नेशनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट रूल हो किंबा फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, कोनोसी भी इमरजेंसी डिक्लेयर परे ताको रेटिफाई करिवाटा दैट विल बी रेटिफाइड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विथ स्पेशल मेजॉरिटी. तो एई तो सॉरी आपनकर जंती की प्रेसिडेंट रूल केस रे सिंपल मेजॉरिटी दरकार पड़े, नेशनल इमरजेंसी रे स्पेशल मेजॉरिटी दरकार पड़े, इवन फाइनेंशियल इमरजेंसी आपन को सिंपल मेजॉरिटी दरकार पड़िबो. तो वर्तमान कहूची कि जेहेतु डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी रे रेटिफाई बाय बोथ द हाउस, तो दिस इज नॉट द एक्सक्लूसिव पावर. तो एटा तो होबो नाही. टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगेंस्ट जदि हमको नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करिवार अछि, दैट इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा. ओनली दैट इज लोकसभा दैट कैन कोन आपनकर करि परिबो. सॉरी आटे टेक्निकल ग्लिच रहिला. सो ओनली किए करि परिबो, दैट इज लोकसभा करि परिबो. देन थर्ड होची टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज आल्सो इनिशिएटेड बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड जो हाउस इनिशिएट करिवो से इम्पीचमेंट मोशन पास कला परे सेटा पुनी नेक्स्ट हाउस को जिबार अछि, सेकंड हाउस को जिवो पुनी तारो कोन पास करिया पई ता सेटा पुनी एते स्पेशल मेजॉरिटी रे पास हवा दरकार. तो एई जिंस पई मध्ये बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट रो रिक्वायरमेंट अछि. हेंस दिस इज नॉट द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा. द आंसर इज ओनली 2 B. Next we will move to question number 2. The question is, with reference to the anti-defection law in India, anti-defection law schedule 10 आपनकर, consider the following statement. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. उल्टा कथा कहला, जदि गोटे नॉमिनेटेड मेंबर आपनकर राज्यसभा रे केते नॉमिनेटेड मेंबर अछंती, राज्यसभा रे आपनकर 12 जन नॉमिनेटेड मेंबर अछंती एवं लोकसभा जोटा अछि नॉमिनेटेड मेंबर ता वर्तमान सेटा डिलीट हे गलानी. तो राज्यसभा रो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स अछंती से नॉमिनेटेड मेंबर्स मानन को मध्य रो जदी के पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करिया को चाहूची ताहले से ओथ नबार 6 मंथ्स भीतर विद इन 6 मंथ्स रे जॉइन करिवा को पड़िबो ताको. तो हेंस ए स्टेटमेंट आ रॉन्ग अछि बिकॉज़ इट कैन नॉट लिखि दैछि. The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. Yes, presiding mon rakithantu anti-defection law states that only the presiding officer of the house, जोटा कि most probably speaker thanti most of the time रे, so presiding officer of the house will decide जोटा कि आपनकर वेदर जो आपनकर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होउची ना होनी सेटा के डिसाइड करिवे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर. मन रखितांतु हाउएवर हिज डिसीजन इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, एटा मन रखितांतु. तो ओनली 2 इज करेक्ट. तो बी हे गला आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India, not Solicitor General, only Attorney General. Attorney General kono? That is Article 76. कौन कहला? Article 76. Okay. So next कौन कहूची? According to आपन कौन कहला?
According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. See, according to the Constitution of India, the government of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. Yes, Morokitantu, only 2 is your correct answer. Is your what? Not 2. Now, because आपनकर जो गवर्नमेंट थाए, हु इज अटॉर्नी जनरल होचंती सिंपल गवर्नमेंट रो वकील. तो गवर्नमेंट रो वकील जे गवर्नमेंट जदि रिजाइन करिवो तो गवर्नमेंट रो वकील मध्य रिजाइन करिवे. तो दिस इज आपनकर अटॉर्नी जनरल. जेते बेले आपनकर गवर्नमेंट रिजाइन करे से टाइम रे अटॉर्नी जनरल मध्य रिजाइन करंती बाय रेजिग्नेशन सबमिटेड टू प्रेसिडेंट. नेक्स्ट योर थर्ड क्वेश्चन इज, if a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflects the consequence of it? 5th schedule कौन आपनकर schedule areas जोटा रहउची 5th schedule रे. तो 5th schedule रे को states रहिबे नाही मन के तांतु almost all the state 18 states of India जोटा अछि जोटी कि 5th schedule टा लागू होउची. आ को states रे लागि होउनी चारिटा states अछि आसाम आपनकर कोन आसाम, देन त्रिपुरा, देन मेघालय, देन आपनकर मिजोराम. एई चारिटा स्टेट जोटा अछि ए चारिटा स्टेट रे आपनकर 5th शेड्यूल लागू हो नाही. तो कोन हबो जदी गोटे एरिया को 5th शेड्यूल अंडर आनी दिया हला, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल. जो एरिया आपनकर जोटा कोन 5th शेड्यूल अंडर आसी जिवो तो सेही एरिया को आपण नॉन ट्राइबल पीपल केबे किनी पारिबे नाही मन रखितांतो. Next question is, what is the position of the right to property in India? वर्तमान right to property जोटा अछि को article, that is article 300A. तो article 300A जोटा अछि आपनकर article 300A. So article 300A जोटा अछि, sorry टी ग्लिच रहउछि आज आपनकर writing pad रे. Okay, so we will adjust to that. What is the position of the right to property in India? As I said, the 44th Constitutional Amendment Act deleted Article 31 and introduced your Article 300A. So, right to property in India is now a legal right. So, legal right to deyichi hele, it is available to the citizens only or it is available to the any person? Yes, the answer is B, to any person. Man rakhithantu. Next, with reference to the Union government, consider the following statement. N. Gopalaswamy Iyengar committee suggested that minister and a secretary be designed solely for pursuing the subject of administrative reforms and promoting it. Yes, this is correct. See, this is a very static question, so you need to remember this. In 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of the ARC report. जो ARC report जानती है, second ARC report, first ARC report. So, Administrative Reform Commission 1966. And this was placed under the Prime Minister's charge. This is also correct. Department of Personnel जोटा PM रो charge under से लोग place करा जाइथिला, that is also correct. So both 1 and 2 is your correct answer. Next we will move to question number. Next question. What was the exact constitutional status of India on 26th of January 1950? बहुत simple question था, but can you even guess कि इटा आपनकर UPSC 2021 रो question था एटा आसीथिला कि एग्जैक्ट 1950 26th of January रे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया कौन थिला? बहुत सिंपल क्वेश्चन. तो इट्स अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इट्स अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इट्स अ सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. द आंसर इज बी. कौन पाई बी? बिकॉज देखो सेक्युलर और सोशलिस्ट ए जो दुईटा वर्ड अच्छी एटा आपनकर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 माने 1950 रु 26 वर्ष परे ए दुईटा टर्म टा ऐड करा जाइथिला. तो टिल देन इंडिया वाज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we adopted the parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from that model? As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of the Parliament to legislate is limited. Yes, British Parliament कौन करथिला 1668 मन रखिदांतो 1668 रु आपनकर कंप्लीट पावर ट्रांसफर कर नेथिला फ्रॉम मोनार्की. तो ब्रिटिश पावर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इट हैज अनलिमिटेड पावर, सुप्रीम पावर. However, at the same time, जदियो इंडिया
डेमोक्रेसी मॉडल जोटा अछि पार्लियामेंटरी मॉडल अछि सेटा ब्रिटेन रु कोन करछि ग्रहण करछि टिल इंडियन पार्लियामेंट हैज limited power केमती limited अछि because of your written constitution, because of your fundamental rights, because of your judicial review, because of your basic structure ए सब जिंस आपण जानउछंती so all these things because of article 32 and 226 जोटा आपनकर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहउछि ए सब जिंस पार्लियामेंट रो पावर को कोन करूछि लिमिट करूछि so this answer is your correct in India matters related to the constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by supreme court जति constitution related कोनोसी आपनकर act को कोन करबा छै रिव्यू करबार छै सुप्रीम कोर्ट को देन से कॉन्स्टिट्यूशनल ताकू सुप्रीम कोर्ट कोन करिवो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रिफर करिवो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बेंच रे मिनिमम 5 जण जज मिनिमम रे एटलीस्ट 5 और किबा ताठो बेसी तो मिनिमम रे 5 जण जज सेठी कोन करिवे जजमेंट दा पई बसिथिबे दैट बेंच कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट तो दिस इज आल्सो करेक्ट so both 1 and 2 is your correct answer. Next move to your question. Constitutional government means constitutional government कौन? This is also a previous year question of UPSC. So representative government of the nation with federal structure. Representative government with the nation with federal structure, is it a constitutional government? No. Government whose head enjoys nominal power. A government whose head enjoys real power. A government limited by the terms of the constitution. Yes. Constitution कौन जदि लेमन टर्म्स रे कहबा constitution is a rule book. So constitution रे जो rules लिखा है से rules and regulations under रे government काम करिवो. Government is limited by the terms of the constitution and constitution is the supreme law of the land. Constitution होची सबठु बड़. तो एई जिंस ही कहे गोटे constitutional government. Next, in India, there is no law restricting the candidate from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies. माने जणे एमपी 3टा constituencies रो लढिबो. एई जिंस इंडिया रे लॉ रेस्ट्रिक्शन नाही कहूची. दिस इज रॉन्ग. रेस्ट्रिक्शन अछि. कोन रेस्ट्रिक्शन अछि ना आपनकर सेक्शन 33 आपनकर क्लॉज केते ना 7 आपनकर सेक्शन 33 क्लॉज 7 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स पीपल्स एक्ट 1951 से कौन करूची ना बैन लगौची रेस्ट्रिक्ट करूची कि गोटे कैंडिडेट मैक्सिमम 2टा कॉन्स्टिट्यूएंसी रो ही लढी परिबे ताठू बेसी कॉन्स्टिट्यूएंसी रे लढी परिबे नाही. एट द सेम टाइम मन रखितांतो 1996 जाए आपनकर जणे कैंडिडेट 3टा कॉन्स्टिट्यूएंसी रो मध्ये लढुथिला हेले ता परे कोन हला ना 1990 आपनकर 6 परे ए आपनकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट चेंजेस होना हला एवं आपनकर ओनली मैक्सिमम 2टा कॉन्स्टिट्यूएंसी रो लढिबार कोहा जाईतला. 1991 रे लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल contested from 3 Lok Sabha constituency. This is correct. 1991 कथा होची 1996 परे चेंजेस आछि तो 1991 रे श्री देवीलाल हरियाणा रो 3टा कॉन्स्टिट्यूएंसी लढी थिले पर मजा कथा होची 3टा कॉन्स्टिट्यूएंसी से हारी जाइथिले बेसिकली. So this is correct. As per the existing rules, if a candidate contest in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him in the event of him her winning in the all the constituencies. मन रखितांतो फॉर एग्जांपल मोदी जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जदि से 3टा कॉन्स्टिट्यूएंसी रो सॉरी नॉट 3टा 2टा कॉन्स्टिट्यूएंसी जदि लढुचंती फॉर एग्जांपल गोटे बनारस रो लढुचंती मानि नियंतु आ गोटे होची लखनऊ 2टा कॉन्स्टिट्यूएंसी लढुचंती हम 2 जगह रे जीती गले तो गोटे ही सीट तांकर अछि आ गोटे उनको वैकेट करिया पड़िबो. अच्छा जोटा से वैकेट करिवे से जो वैकेशन जो वैकेंसी क्रिएट हला सेठी बाय इलेक्शन हबो. अच्छा से बाय इलेक्शन रो खर्चा किए करिवो सेटा कहूची कोन से पार्टी करिवो ना सेटा किए करिवो आपनकर सेटा करिवो इलेक्शन कमिशन. तो मन के जानतो दिस इज आल्सो रॉन्ग. तो ओनली आंसर इज योर करेक्ट आंसर इज 2. नेक्स्ट इज एट द नेशनल लेवल which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act of 2006. बहुत simple answer अछि Ministry of Tribal Affairs. Definitely tribal related forest related आपनकर जो forest dwellers मानक related कोनोसी भी act अछि that must be by
Ministry of Tribal Affairs. A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India? Very tricky questions, but এটা মধ্যে UPSC রে আসি সারিছি অলরেডি কি a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power. सी जदि कोनोसी एग्जीक्यूटिव को गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को हम अनकंट्रोल्ड पावर दे दबा तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल जोटा सेटा वायलेट होबो मन रखितांतु दैट इज आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बिकॉज़ पार्शियलिटी स्टार्ट हे जिवो से केस रे अनकंट्रोल्ड पावर रहिबो तो राइट टू इक्वालिटी मेंटेन होबो नाही एई सब बाकी आर्टिकल्स आपनकर दिस इज कोन हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एंड देन आर्टिकल 28 आपनकर कोन रहउची राइट टू फ्रीडम आपनकर रिलीजन रहउची देन आर्टिकल 44 कोन रहउची आपनकर दैट इज डीपीएसपी अंडर रहउची जे आपनकर कोन सिविल जो यूनिवर्सल सिविल कोड जोटा से जिंस आसे आर्टिकल 44 तो एई सब जिंस किछि न दैट इज आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी. Hope you have liked this video and you have understood all the questions that has been discussed in today's class. Thank you very much.